आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं। तीन गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और एक मैं। आज आप रो नहीं सकते। आईफा में जब पहला आपने फर्स्ट लुक किया था, it was a very emotional moment at आईफा all the way in Madrid. आईफा में तो बिल्कुल नहीं रोया था मैं। अरे lying. नहीं, absolutely नहीं, बिल्कुल नहीं। Well, of course, well, I think life has come full circle for me. My father came a few decades back to this Mumbai film industry, and he saw success, he saw a lot of disappointments, but that gave me strength, me and my brother. So I want to thank my father, my mother who's here, my brother, both my brothers. And of course, I don't want to say much about myself. It's a very joyous moment for me today. It's great pride that today my son Harshvardhan Kapoor, is over here. All I can say is, beta ho to aisa, magar I just want to say, meri baat nahi sunta. He just doesn't listen to me at all. And I know people are very, very apprehensive about star sons, but I can assure you, Harsh, and all of you star children who are, they don't have to be apprehensive, especially Harsh, because whatever he's done today, he's done it on his own. He's got this film on his own. Absolutely. And he believes he's different, but don't expect anything like me from him. Absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, that Rakesh, Om Prakash Mehra, spotted him, groomed him, and the entire team, have made him Mirzya today. And I can see Mirzya on screen today. I just want to say that all of you over here, friends from the media, my colleagues, my family, Javed Saab, Gulzar Saab, Diler Saab, Shankar, absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. Mera hak banta hai. The entire family has given blood, sweat to this business, never compromised, never made no scams, never made money, just made enough money, but gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. Thank you, all of you. Thank you, Gulzar. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. Kapoor. A very emotional moment. Please take a seat. Thank you, Bharti. Thank you so much, Vinodji. Thank you so much for joining us. रंग दे बसंती के बाद आपने दोबारा इस तरह से एक अतीत की बहुत खूबसूरत सी कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ा है। ऐसा करते हुए एडिटिंग टेबल पे आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ती है क्या? ये सवाल एक्चुअली काफ़ी है।
या आजकल का जो सिनेमा है और उसका जो ग्रामर है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं अगर 2 मिनट हैं तो। जी क्या है, कैमरा फोटोग्राफी से आया है, एक्टिंग थिएटर से आया है, राइटिंग तो राइटिंग से है, संगीत की दुनिया से है, क्लासिकल फोक एंड ऑल दैट। एक एडिटिंग ही ऐसा आर्ट फॉर्म है सिनेमा जो सिर्फ सिनेमा की वजह से आया। ये सिर्फ 100 साल पुराना है और ये दिस इज़ द मोस्ट कहते हैं ना द बेबी आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। हम सब मिलके बनाते हैं सब कोलैबोरेटिव आर्ट। तो एडिटिंग अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आजकल सब डिजिटल हो गया है तो हम स्टोरी को नॉन लीनियर भी बोल पा रहे हैं। मतलब पहले बिगनिंग से शुरू करते थे, 1 2 3 4 से 10 तक जाते थे, अब 2 से 12, 12 से ये। एट द सेम टाइम हम आपके ख्यालों में भी घुस सकते हैं कि बाजे वक्त आप ट्रेन में बैठी हैं बट आपको याद अपने बचपन की आ रही है, तो वी कैन आगे पीछे वो दोनों स्टोरियाँ चला सकते हैं। तो बहुत सिनेमा के जगत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। आगे चलेंगे तो अभी वर्चुअल और ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सब आने वाला है। एडिटिंग तो फिर पीछे रह जाएगी। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 कहानियाँ और बहुत खूबसूरत कहानियाँ, उन्हें जोड़ते वक्त आपको बहुत खूबसूरत से जो दृश्य आपने या गुलजार साहब ने लिखे होंगे वो काटने पड़ते होंगे, तो उस वक्त आपका अपने से ही एक वो होता होगा, द्वंद्व होता है कि ये चीज़, क्या चीज़ रखूं और क्या चीज़ छोड़ूं, खासतौर पे जब गुलजार जी हो तो। या मतलब इतनी प्यारी स्क्रिप्ट हो, फिर उसको आप सब लोग मेहनत से काम करते हैं और उसको शूटिंग करते हैं और बहुत मटेरियल होता है हमारे पास। और बट एंड में जो कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है, एक फिल्म का स्क्रीन प्ले कभी ख़त्म नहीं होता। एक लिखा जाता है, एक शूट किया जाता है, फिर एक्टर्स उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, डायरेक्टर अपनी तरह से, म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपनी तरह से, कैमरामैन, फिर एडिटर के पास जब वो पहुंचती है बात तो वो अपनी तरीके से इंटरप्रेट करती हैं उन्हें और फिर वो उस कहानी को वैसे बताते हैं। तो स्क्रीन प्ले बार बार लिखा जाता है और जब ऑडियंस देखती है, हर एक ऑडियंस का मेंबर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मिर्ज़ा और साहिबा की जो कहानी है पहले की और आपने आज उनको रिलेट करने की कोशिश की, हर्षवर्धन को आपने ऐसे नहीं सोचा कि उनके फिजिक पे थोड़ा वर्क कर दिया जाए, मतलब यू नो विद हैविंग सम मसल्स आल्सो, दैट थॉट हैड कम इन योर माइंड? कुड यू टॉक? एंड हर्ष आल्सो, हर्ष से हम पूछना चाहेंगे कि वो अपने डैड की तरह ही यू नो लाइक ही आल्सो हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ राइट फ्रॉम Sohail, जी okay, the character of this film, I think we've got too used to these 6 packs these days. Number 1, no, ये भेड़ चाल जो है. Number 2, Mirzya's character was not that of a boxer. Neither. So Harsh has given me 18 months. Now hear me out, since we are talking about prep. 18 months before the shooting, don't get me wrong. In that he has worked on the role of first the contemporary character, which is Munish in the film. So for them, in their first film, they are actually doing double roles in their first debut films. And that character required a certain physicality. Correct? Then after finishing that, we took a 7th-month break because they had to prepare in a different way for another film within a film for another character to be in a different zone altogether. It's not easy, and in your first film. For 6 months they prepared again. There is something called horse riding and mounted archery. If you study that, when you are a horse rider, you got a very lean and athletic look about you. You don't have a 6-pack look about you and all that. So I'm sure when we make a movie about a boxer, we'll satisfy you. जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी, आपका रिएक्शन क्या था? First of all, we actually met in 2008, I think, and we kept meeting every couple of months after that. And at the time, Rakesh sir had mentioned that he was working on the story of Mirzya Sahiba, and Gulzar Saab was writing the screenplay. And I was actually still in college at that time. I was 18, 19 years old.
I'm 25 now, so this is a conversation that's been going on for a very long time. And then I went back to college after the first interaction with Rakesh sir, and I actually did what I could, try to find whatever I could about the story on the internet. And you know, obviously it's a romantic tragedy, and it's very different from the other romantic tragedies because it's the two lovers themselves that make decisions that eventually determine their destiny. You know, so it was very complex, and it was very brief and very vague on social media. So as kind of time went on, we kept reconnecting, and then eventually, I think in June 2013, after talking for like 2 or 3 years, we finally decided that it was the right time to kind of embark on this journey. And until then, I hadn't really heard anything from the script. So then finally I sat with Mehra, and then he narrated about 10 or 15 pages because the script was still a work in progress at that time. And just the beauty that which it was kind of written, because you know, it's very rare these days to find scripts that are very poetic and very romantic. And I think for me, you know, I read it when I was 22, and I was reading so many other romantic stories and scripts, but I think that this is the most contemporary romantic film ever. You know, I mean, at least from what I've read, the interpretation of it. You know, so I was completely blown away. It's one of those things that you hear it and you're like, I have to. I'll give anything to be a part of this film, you know. I mean, it's romantic, it's complex, you get to play 2 characters, it's poetic, it's visual, it's musical. So it's like a fever dream, you know. So it's a dream. कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना? तो एक्चुअली 2 किरदार है, एक है आदिल का और एक है मिर्ज़ा का. तो फर्स्ट वी वर्कड ऑन आदिल अ लॉट. Actually we worked on both simultaneously, and when I heard the story, I knew that you know, the whole film depends on my ability as a rider and an archer, because Mirzya is the best, you know. And I'd never been on a horse, so it sounds very easy, but actually when you start doing it, you know, and then you know the script, so you know how sir is going to shoot it. It's not like other films where, you know, you're cut to your close-up and then you cut to the stunt double. It's not one of those films. You know, I knew the level that I had to kind of reach to, and I moved away to Delhi for 6 months first, because you know, Bombay doesn't have too many places where you can learn that skill. So I learned the basics there for 6 months, and I had a lot of falls. Then I came back, then we continued, and you know, I mean, it's a 20-minute answer. I can't really sum it up for you, but you know, it was basically very difficult. आप दोनों कितना प्रेशर महसूस करते हैं इस वक्त? फिल्म रिलीज पर है और बहुत ज़्यादा लोग आपसे उम्मीदें रखे हुए हैं. मैम, प्रेशर तो मतलब, I hope, at least I'll speak for myself, if I kind of have 5% of the genes that my grandmother or my aunt has, तो ऐसे लगेगा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है. बट प्रेशर नहीं है, क्योंकि दोनों हर्ष ने और मैंने, वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट, एंड व्हेन वी हैव गाइडेंस लाइक राकेश सर एंड गुलजार साहब, इट मेक्स लाइफ मच ईजियर. सो वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट, एंड वी होप पीपल लाइक इट. आपने धुनों पर बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे नगमे लिखे हैं जो पहले लिखे गए, बाद में धुन बनाई गई. इसमें मिर्जिया में आपने क्या अनुभव रहे? आपने किस तरह से आपकी रचना प्रक्रिया रही है? मिर्जिया में कहानी ने खुद ही गीत लिखवा लिए मुझसे. जो कहानी थी और जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जब उनको बयान कर रहे थे तो उसमें एक फोकलोर की फील थी, एक फोकलोर का अंदाज़ था. तो वो उस कहानी के साथ अपने आप जब उसकी ज़बान बन जाती है, गीतों की भी, जो कहानी की ज़बान हो. और एक तो ये कि स्क्रिप्ट के साथ बहुत कुछ लिखा गया, और मेरा ख्याल है पहली बार ये मैंने इतना ज़्यादा बोझ उठा के इतने बड़ी उलझन में शंकर को डाल दिया था कि अब इसके ऊपर आप धुन बनाइए, मैं हमेशा आपकी धुन पर लिखता रहा हूँ, अब आप इसका देखें क्या करते हैं. और उनका ये है कि मैं जैसे उस वक्त बात करते हुए भी मैं कहा कि ये भरे हुए हैं पूरे मेलोडी से, इनको ज़रा सा हिला दो तो मेलोडी निकलने लगती है और बाहर आने लगती है.
और बस वो उसके बाद मैं ओ के सामने रख लेता हूँ जमा करने के लिए, और कहीं कहीं उन्हें ये कि अल्फाज दिए, उन्होंने धुन भी बना ली, वहीं की वहीं बना ली, और उसके आगे की धुन बना ली, उससे अंतरे बना लिए, तो फिर देन यू हैव टू फॉलो इट, इट्स अ टू वे जर्नी। और वो अगर आपने थोड़ा रियाज किया हो पिछले सालों में तो फिर आप शंकर के साथ काम कर सकते हैं। क्या बात है। गुलजार साहब से आप काम कर चुके हैं, पहले भी कर किया आपने। नित नित नए गुलजार, क्या अनुभव रहा आपका काम करने का? मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा ही नया गुलजार हैं हमारे लिए। एवरी डे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस, एवरी डे इज़ अ न्यू सरप्राइज, एंड कुछ ना कुछ हम लोग रोज़ सीखते हैं इनसे। तो इट्स बिन मैं क्या बताऊं कि ऑल आई कैन से इज हम लोग सब बहुत अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि वी आर इन एन इरा वेयर वी आर एबल टू वर्क विद अ मास्ट्रो लाइक गुलजार साहब। क्या बात है। थैंक यू सो मच शंकर सर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राकेश मेहरा जी का कि जो ये बिलीव रखते हैं, प्यार करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं। तो काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से बहुत ही आराम से बैठा हुआ था, अपने शोज़ कर रहा था, म्यूज़िक काम करता हूँ, सालों साल बिज़ी हैं, पर फिल्मों में आप खुद ही जानते कोई गाना नहीं आ रहा था, ना ही मैं गा पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा था उससे मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि किस तरीके का ये दौर शुरू हो गया है, कैसे गाने शुरू हो गए हैं। तो जब मुझे बुलाया गया मिर्ज़ा के लिए और मैं मुंबई आया, और मुंबई आकर स्टूडियो में शंकर साहब, गुलजार साहब बैठे हुए थे, और पहुंचा जी, हाँ जी मुझे क्या गाना है। तो मुझे शंकर जी ने कहा कि आपने स्टोरी को, ये एक हो रही है और आपने स्टोरी लाहौरों की बस्ती है, इस तरह आपने बताना है स्टोरी को। तो मैं 15-20 मिनट बहुत ही सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह बोलूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो गाने के लिए तो है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जैसे ओमपुरी साहब, गुलजार साहब की आवाज़ है। लगता है कि फ़रिश्ते बोल रहे हैं, बहुत कमाल। तो मुझे लगा कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, और फिर मैं सोचा कि अब थोड़ी देर और बिताया, तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये आप फिर साईं जहूर जी की बहुत अच्छी आवाज़ जो शुरुआत वो करते हैं मिर्ज़ा में, बहुत सूफ़ी फ़कीर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका सूफ़ी में, तो उनकी आवाज़ सुनाई। फिर कहा कि इसमें आप ये 2 लाइनें ऐसे ऐसे आप गा दीजिए, वादियाँ दूदियाँ कोहरे की। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैंने रिदम वगैरह बिल्कुल नहीं सुनी थी कि कैसी रिदम में क्या है, और वो मैंने गाना गाया। फिर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मुझे लगा, मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मिर्ज़ा अगर हो तो वो कैसा हो, कैसी उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसे बुलाया जा सकता है। तो मैंने फिर गुजारिश की गुलजार साहब को, राकेश जी को, शंकर जी को कि मैं एक लाइन मिर्ज़ा साहब अगर गाना चाहता हूँ तो अगर आप बोलें तो बहुत बड़ी दरिया दिली है, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, उनके सामने कुछ कहना बहुत छोटी बात हो जाती है। और मैंने कहा जी ठीक है आप कीजिए। तब रब जानता है कि मुझे लगता है कि ये हर्षवर्धन जी, श्यामी जी, इनकी तकदीरों की वजह से ये सारे हम लोग जुड़े हैं, और इनकी तकदीरों की वजह से एक इतना बड़ा काम है। क्योंकि मिर्ज़ा साहिबा जी मिर्ज़ा साहिबा बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत हम भी बचपन से सुनते हैं यहाँ पे आप सब ने, लेकिन इसे बोलना, इसे कहना और इसे गाना अगर रब की मेहर हो तभी हो सकता है। कि ये बहुत बड़े और सच्चे आशिक हुए हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल, तो इनके ऊपर गाना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप गाइए। तो फिर एक ही बार में माइक के सामने मैं खड़ा हुआ, और जो मेरे दिल से आवाज़ आई बिना सोचे समझे, ओ मिर्ज़ा और उस चीज़ को 4 चांद लगा दिए शंकर एहसान जी की टीम ने। गुलजार साहब के बोल हैं और राकेश जी के। तो मैंने तो बहुत एक ही लाइन छोटी सी गाने की कोशिश की, और रब ने गवाही
फिर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो एक रुख है, दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, म्यूज़िक है, वो मिर्ज़ा की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया और बहुत साफ़ सुथरा और खूबसूरत प्योर इंडियन, ये जो गाना आप सुनेंगे ये प्योर इंडियन म्यूज़िक है। ये वादियाँ दूधियाँ कोहरे की, ये जो गाना पूरा चल रहा है, इसमें कहीं भी आपको वेस्टर्न या कहीं से यहाँ से म्यूज़िक चुराया वहाँ से चुराया बिल्कुल नहीं। एक इंडिया की रूह है, प्योर इंडिया का म्यूज़िक है और पहला म्यूज़िक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और मीडिया का भी और जितने भी फैंस हैं जिन्होंने सर आँखों पे बैठा लिया। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप इन दोनों स्टारों को, हमें, हम सबको ब्लेसिंग दीजिए कि और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते रहें। शुक्रिया। In this movie, there's a lot of folk songs, and you have blended with the modern music. How could you do this and something very different? Gulzar sir also told that you have blended with the modern music. Well, just like how the script is, just like how the characters of the film are, just like there are there's so many dimensions in the film. It's dynamic. There are so many emotions in the film. Similarly, our music could not have been just, in one layer. If you hear the title song again and again and again, you'll be discovering new layers every time you see. You'll see, this voice. Oh, that's a new voice. Yeah, this rhythm is coming in here. Suddenly you'll see Nuran sisters coming here. So we wanted to give that a sense of, color. If you hear the title song, for example, it's celebration of Mirzya. There are so many flavors, there are textures. If you hear them in isolation, you probably might feel that this voice may not go with this voice, or this genre may not go with this genre. But, with whatever you would like to expand on that, we just brought these things together in an interesting way, which is musically and aesthetically of some value. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आप वो कौन-कौन से एक्टर हैं जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनके आप बहुत बड़े फैन हैं? I make it a point to watch all films. I think there's so many amazing actors, and I like certain films from of certain actors. Amir is a very big influence. I think when at least my generation was growing up in 2001, Dil Chahta Hai came, then Lagan came, then Rang De Basandi came, and those were defining films for us when we were growing up. And also at that time, actors were doing so many films at one time, and he decided to work more in isolation and really focus on one thing at a time. And I've been lucky enough, because of the way Mehra sir works, to have that experience on Mirzya. And I want to keep having the opportunity to do that with every film if it requires it. But to answer your question, I think Amir for his choices and determination. I think Ranbir for his ability to be spontaneous and his brilliance. Those are the two that come to my mind.